Hello everyone, welcome back to PYQ Series Revised to Ace program for CSE 2023, and today we are going to discuss very important question, very basic questions and economy से key concept based questions हम देखेंगे जो कि recently UPSC ने different exams में पूछा है and it is related to microfinance, NBFC, IIP, 8 Core Industries। आज 3 क्वेश्चन लेंगे, 3 टॉपिक्स लेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। कभी कभी ऐसी बेसिक चीज़ें जो हैं रिवाइज करने के बाद भी गलत हो जाती हैं बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन। तो एक बार देखते हैं कि इस तरीके से यूपीएससी इज ट्राइंग टू ट्रैप और व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, विल सी। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about a borrower from microfinance company is not correct? This was the question number 7 in CDS 2022. I guess जो भी set paper हो A या जो भी है. So of that respective set, this is the question number 7. Why I am highlighting on 7? We will see. So the question is with respect to the microfinance company and about a borrower from a microfinance company, which is not correct. The first statement is the borrower should not have annual income beyond a limit. Annual income की बात हो रही है. The borrower should not seek loan amount beyond a limit. The borrower should not refuse to offer a collateral. The borrower should not refuse to pay any rate of interest offered. Should not refuse to pay any rate of interest offered. अभी क्वेश्चन अपने हिसाब से जो भी है आप लोग का आंसर प्लीज लेट मी नो, बट विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो फाइनेंस वी शुड नो सर्टेन थिंग्स, पहले वो देख लेते हैं। सो माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर्स इज व्हाट? इट ऑफर्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू हुम? टू लो इनकम पॉपुलेशन। तो इनकम लिमिट ही है कि भाई जिसकी बहुत ज्यादा हाई फाई इनकम नहीं, अगर कोई किसी का क्रेडिट वर्थ ज्यादा है, सो दे विल गो टू दी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, हाई नेटवर्थ पीपल हो जाएंगे वो, सो दे विल नॉट लुक फॉर माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस की जरूरत उसी को पड़ती है जिसके पास बहुत ज्यादा इनकम अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती, अदरवाइज तो फिर माइक्रो की जरूरत ही नहीं रहती। माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो डिपॉजिट, माइक्रो जितने भी फाइनेंशियल टूल्स होते हैं दे विल बी माइक्रो। दे प्रोवाइड स्मॉल लोन्स इन इंडिया बिलो ₹1 लाख इज माइक्रो लोन्स। 1 लाख से कम है तो माइक्रो लोन में। नॉन बैंकिंग MFIs भी हैं, NBFCs MFIs भी हैं। They are regulated by the non-banking financial company, microfinance institution, Reserve Bank direction by RBI. So there are various categories. The examples could be joint groups, self-help groups. The examples can be Grameen Model Bank, rural cooperatives. So ये microfinance देते हैं, microfinancial finance institutions इनको बोला जाता है। Now माइक्रो फाइनेंस, अब मुद्रा स्कीम के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो क्या करता है? रीफाइनेंस करता है कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू ₹10 लाख। कोलेटरल का प्रॉब्लम हो रहा था, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है कोलेटरल फ्री लोन्स दे दो। नाउ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है कि वो कोलेटरल मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। सो कोलेटरल फ्री लोन मोस्टली जब ऐसे स्मॉल लो इनकम ऐसे लोन्स होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कोलेटरल फ्री दे दो, ठीक है। सो टू नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बोरोवर्स फॉर रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज इन नॉन फार्म सेक्टर, गवर्नमेंट ने खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि कोलेटरल फ्री दो, नो प्रॉब्लम। इफ समबडी इज नॉट एबल टू शो और गिव अप एनी कोलेटरल, फाइन, इट्स ओके। सो दे हैव सेट अ लिमिट, शिशु लोन्स अप टू 50,000 to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs, so that non farm sector में if somebody, the small borrowers want to grow, government is giving them mudra loan. So that is also refinanced through microfinancial institutions. Now let's have a look at the question. The question was, which of the following statement about a borrower from microfinance institution is not correct? The borrower should not have annual income beyond a limit. No, जब हम बात कर रहे हैं कि लो इनकम ग्रुप, तो मीन्स कुछ तो लिमिट होगी उनकी इनकम की। सो दे शुड नॉट हैव एनुअल इनकम बियॉन्ड अ लिमिट, दिस इज ट्रू। एक लिमिट के बियॉन्ड उनकी इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर उस लिमिट के बाहर उस लिमिट के बियॉन्ड अगर उनकी इनकम है, देन फिर वो माइक्रो फाइनेंस के लिए सूटेबल नहीं है, फिर उनके लिए और भी बैंक्स हैं और सारे फाइनेंशियल टूल्स हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नॉट करेक्ट। The borrower should not seek loan beyond a limit. Yes, microfinance institution माइक्रो लोन्स की ही डेफिनेशन है इंडिया में कि 1 लाख से कम। मुद्रा ने उसको रीफाइनेंसिंग के लिए कुछ लिमिट सेट कर दी है। सो वेयर एवर इट इज
लिमिट इज फिक्स्ड, लिमिट के बियॉन्ड अगर बात होती है तो फिर वो दूसरे तरीके के इंस्टीट्यूशंस होंगे, दूसरे तरीके के टूल्स होंगे, देन इट विल नॉट बी माइक्रो फाइनेंस. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. द borrower should not refuse to offer collateral, should not refuse to offer collateral. अगर भाई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोलेटरल मांगता है तो कोलेटरल देना पड़ेगा. अब जैसी कंडीशन है, मुद्रा के अंदर कोलेटरल की जरूरत नहीं है, सो कोलेटरल फ्री रिक्वायरमेंट है. सो दिस माइट और माइट नॉट हैपन. सो वी कैन नॉट से इट इज नॉट करेक्ट. It is like they should not refuse. The borrower should not refuse to pay any rate of interest offer. So the borrower should not refuse to pay any rate of interest offer. आप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हो, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1%, 2%, 5%. जनरली माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 12 to 13% है. So whatever is being charged, they have to pay. They cannot refuse. They cannot refuse to pay any rate of interest offered. Any rate of interest मतलब यहाँ क्या है कि it depends. जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आरबीआई का रेगुलेशन तो अकॉर्डिंगली मैनेज होगा. लेकिन माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इफ दे आर आस्किंग कि yes you take this loan and in order if you are taking this loan you have to pay this much interest. They cannot say, customer cannot say no I will not pay. So they should not refuse to pay any rate of interest offer. अब कुछ लोग ओवरथिंक करेंगे, any rate of interest बोला है, ठीक है. सो ऐसे ओवरथिंक नहीं करना. बट व्हाट अबाउट दिस? द borrower should not refuse to offer a collateral. They should not refuse to offer a collateral. ये सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिविटी है इसके अंदर. So अब ये बोल रहा है which of the following is not correct? Borrower should not have annual income limit beyond. This is correct. Borrower should not seek loan amount beyond limit. Correct. The borrower should not refuse to offer a collateral. They can, they cannot. The borrower should not refuse to pay any rate of interest offered. अब यहाँ पे सारी बात आती है रीड करने की. भाई कोलेटरल फी अगर कोलेटरल फ्री है, अगर मांगा भी जा रहा है तो मना कर सकता है. So this statement is they should not refuse to offer a collateral. This is fishy. This is subjective. This is not true. The borrower should not refuse to pay any rate of interest offered. Rate of interest अगर देना पड़ा तो देना, उसको refuse नहीं करना है. ठीक है? So here the answer is this is not correct. ठीक है? Now we have the second question of the day. So this question is again from CDS 2022. Which one of the following statement about NBFC is not correct? NBFC is non-banking financial institutions, non-banking financial companies. Which of these statements are not correct? NBFCs cannot accept demand deposit, term deposit. ये सारे basic concepts हैं जो आपको पता होने चाहिए. That is the basic expectation. NBFCs cannot give loans. ये सारा cannot है और इधर भी not पूछा है. They are playing. NBFCs cannot issue checks drawn upon themselves. NBFCs cannot offer deposit insurance facility of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. And it is asking which is not correct. I am sure that you must be knowing this answer, but still we will discuss it first, then we will see the answer. So here we have the list of NBFCs, what they cannot do, what they can do. NBFC सबसे पहले क्या? It is a company registered under Companies Act 1956. They cannot accept demand deposit, but they can accept term deposit. Not demand deposit, but term deposit. Term और demand का difference तो पता ही होगा. एक बार नहीं पता, quickly revise. NBFCs do not they are not part of payment and settlement, so they cannot issue checks drawn on itself. Checks नहीं issue कर सकते हैं because they are not part of the payments and settlement system. Deposit insurance facility of Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation is not available to the depositors of NBFCs. If somebody is depositing their money in the NBFCs, they will not have the deposit insurance. आप scheduled commercial banks में जाते हो, अगर बैंक का कुछ हंगामा हो जाता है, बैंक दिवालिया हो जाता है, deposit insurance credit guarantee corporation is there. आप
कि जो डिपॉजिट है वो इंश्योर्ड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर पीएसयू है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पीएसयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से होता है। What NBFCs can do, they can accept term deposits, they can give loans, they can make investment, they can borrow from the banks. So what they can and what they cannot, this basic concept we have revised. Now let's have a look at the question. The question was, which one of the following statements about NBFCs is not correct? NBFCs cannot accept demand deposit. True. They can accept term deposit. NBFCs cannot give loans. So we have seen NBFCs can give loans. NBFCs cannot issue checks drawn on themselves. True. NBFCs cannot offer deposit insurance facility of deposit insurance guarantee credit guarantee corporation. This is also true. So our answer is not correct is this. They can give loan, they can borrow from banks, they can accept the term deposits. Now the previous question was asked by UPSC in the CDS 2022. Same year in CAPF 2022, this question was asked in a different format. A non-banking financial company cannot, however cannot is there. But what are the options? They cannot give loans, they can make investment, we have seen, they can borrow from bank, yes, they can seek demand deposits from public and cannot issue checks. So checks तो हमने देख लिया, they cannot issue. They can seek term deposits from public. They can give loans also. ठीक है, इसमें they cannot issue check, ये सही है, but they can seek demand deposits. This is wrong. So what they cannot do? They cannot do this. So D option is correct. Same year, different exams, different way of asking this. हो सकता है सिविल सर्विसेज में ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अराउंड ही कुछ क्वेश्चन आ जाए. सो वी शुड बी रेडी फॉर दैट. टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज, रेगुलेशन, एक्टिविटीज, व्हाट दे आर सपोज टू डू, व्हाट दे आर नॉट सपोज टू डू, ये देख लिया हमने. ओके, सो दिस इज फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव the next question is CDS 2022 again. Again, it is very basic question. The question is, Department of Promotion of Industry Internal Trade has revised the base year index of 8 core industries having a combined weight of about 40.27% of in the index of industrial production. IIP में core industries का जो weightage है 40.27% का है. Which one of the following, again they are asking, is not one of the 8 core industries? The students who are part of our classroom program, we have few days back itself we have done in our prelims classroom as a part of basic static linkage. I am very sure जिन लोगों ने अदरवाइज मेरी क्लास नहीं भी अटेंड की है, आपने बेसिक इकोनॉमी पढ़ी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं, ये आराम से आप मार्क कर सकते हैं. कोल इज देयर, रिफाइनरी इज देयर, सीमेंट इज देयर, रबर प्रोडक्ट्स आर नॉट देयर. सो द आंसर इज सी, बट वी विल हैव अ लुक. So this was in news, because of which we also discussed it in our class. It was in current affairs. Retail inflation eases but still over 7%. IIP hits 12-month high of 19.6% in May. So this was there in the month of July. We are covering last 1.5 years current affairs. So there we have covered in the month of July. Now the IIP, if we see the sectoral composition, maximum is manufacturing. 77.63%, let's say 78%. Around 8% is electricity and around 14% is mining. MME, manufacturing, mining, electricity. 78, 14, so this is 78 approx, this is 14 approx and this is 8%. ये तो sectoral analysis हो गए. But if we have to talk about 8 core industries, तो वो कैसे होता है एक बार देख लेते हैं. So here we have the जो base year revision की बात हो रही थी. The base year of IIP is 2011 to 12 and IIP is released by CSO. 8 core industry comprises 40.27% of IIP. That also we have seen, the question itself was telling about that. And 8 core industries are released by the Office of Economic Advisor. उसकी जो कैलकुलेशन होती है, जो भी रैंक रेटिंग होती है. एंड द 8 कोर इंडस्ट्रीज सेक्टर्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर. यूपीएससी हैज आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर, आई थिंक 14 or 15 or somewhere in 16, they have asked in the decreasing order, lowest, highest, they have asked this. So 8 core sector
industries in decreasing order of their weightage are refinery products, हाईएस्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे. लोवेस्ट वेटेज किसका है? फर्टिलाइजर का है. इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट. सो देयर इज नो रबर हियर. ओके, हाईएस्ट रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, लोवेस्ट फर्टिलाइजर. टॉप 3 अगर देखें, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील. बाकी कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर आप मार्क कर सकते हो. सारे इंटर रिलेटेड हैं. सो इफ यू कैन रिमेंबर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इटसेल्फ. अदरवाइज याद करने के तरीके बहुत हैं कि 8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन है, सो उसके याद करने के तरीके अलग हैं. बट आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इटसेल्फ. ओके, now let's have a look at the question again. So if you will read the question, it is very basic question, and the question was about, just hold on. Yeah. So the question is, the DPIT, which of the following is not one of the 8 core industries? So we know rubber, refinery is first, and the second was electricity, third was the steel, fourth was coal, then crude oil. ठीक है, लास्ट में फर्टिलाइजर था ना, उसके पहले आपकी सीमेंट, नेचुरल गैस एंड सीमेंट, एंड देन फर्टिलाइजर. ठीक है, सो फर्स्ट इज दिस, लास्ट 8th इज फर्टिलाइजर, एंड नॉट वी हैव सीन. Okay guys, so this is it with respect to the 3 questions which we have discussed today. Let's have a look quickly. So which one of the following about a borrower from microfinance company is not correct? So we have seen that they should not refuse to offer a collateral. This is not correct. अगर collateral नहीं है, बहुत सारी ऐसी facilities रहती हैं उनको कि collateral free loan they can avail. और पर्पज़ ही यही होता है कि microfinance और small जो कैपेसिटी स्मॉल इनकम ग्रुप है उन्हीं को दिया जाए, तो उनके पास कोलेट्रल चार्ज करना दे कैन रिफ्यूज. नेक्स्ट, वी हैव सीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनबीएफसी इज नॉट करेक्ट. सो दे कैन नॉट गिव लोन्स, दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज दे कैन गिव लोन्स. नेक्स्ट, sorry, I think the third question we have already discussed. This was the third question which we have taken. So these 3 questions we have discussed today, and we have seen on the similar lines of this question NBFC, what was the question in the CAPF. So ये basic linkage हो गया, basic revision हो गया आपका about the basic concepts. इसके help से क्या करना है, you go and revise your industry, you go and revise your microfinance, payment banks वगैरह भी चाहे तो revise कर सकते हो, and now you will be sharp enough to understand that what kind of question can be asked. This is it guys, and this is about our current affairs program 2023 for prelims which we are running, and videos are there. last 1.5 years का coverage हो रहा है, question answer format में हो रहा है, मैं कई बार बता चुका हूँ. So still there is time, and we are doing lot of PYQ linkages, we are doing lot of static linkages, so it will be very good if effective revision will happen through this course. Okay, of all the subjects including your current affairs. तो course ही current affairs का है. So current affairs we are making it interesting, enjoy कर रहे हैं हम लोग with the help of PYQs, with the help of static, और current affairs को एक different approach से handle कर रहे हैं. You can check the demo video, you can check the first 2 classes are free, and you can attempt the questions on the portal, you can download the PDF, read the solution, you will get to know about it. Okay guys, so see you all, take care, we will meet tomorrow. Bye bye.